Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 3, that is human health, and today I will deliver its 4th lecture. And the students will be able to understand the ways of maintaining good health, balanced diet, and its components. So my dear students, let's start the lecture with the recap from the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer them. What types of precautions have been shown in the given pictures? So my dear students, here you can see a few pictures. आप quickly pause करते जाएं वीडियो को, एक एक पिक्चर देखें and tell me कि ये कौन कौन से precautions हैं जो हमें ज़रूर लेने चाहिए. Very good. This is social distancing. We must not eat from food vendors, street food. Very good. So my dear students, when we take preventions or when we take precautions, so that is sustainability of health. यानी कि अगर आप precautions लेंगे, आप preventions लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो healthy lifestyle है और आपकी जो health है वो sustain करेगी, आप healthy रहेंगे. So my dear students, now is the time for an activity. What you need to do is your teacher will divide you into 2 groups, group A. And group A will make a chart of symptoms of COVID-19. ठीक है, आपको charts बनाने हैं. तो group A जो है वो COVID-19 के जितने भी symptoms हैं हमने previous lectures में पढ़े हैं, वो symptoms जो है वो बच्चे वो draw करेंगे. And the second group, the group B, will make a chart on preventive measures. और जो group B है वो उसके preventive measures के ऊपर एक chart बनाएगा and display that in your class. Now pause the video and complete this task. I hope you have done it. So the group A will make chart on the symptoms of COVID like sneezing, fever, coughing. And this is the task of group A. And group B will make the preventive measures task like wearing a mask, washing of vegetables and fruits, and taking a bath daily and social distancing. So that is how group B will draw or write the preventive measures and then paste the chart in your class. So my dear students, in today's lesson, the students will know about the ways of maintaining good health and balanced diet and its components. So my dear students, today the students will be able to describe the importance of maintaining good health, recognize everyday behaviors that promote good health like balanced diet, drinking clean water, exercising regularly, brushing teeth, getting enough sleep. And they will also be able to define balanced diet and explain its components. So my dear students, क्योंकि हम एक healthy lifestyle की बात कर रहे हैं, हम अपनी health की बात कर रहे हैं, human health की बात कर रहे हैं, हमने different diseases को देखा, हमने उनके symptoms को देखा और हमने ये देखा कि हम कैसे इन diseases से अपने आप को prevent कर सकते हैं, बचा सकते हैं. So my dear students, आज हम ये देखेंगे कि एक healthy lifestyle के लिए diet कितनी important है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें healthy रहने के लिए, हमारे healthy रहने के लिए important है. So my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. Eat of the good things which we have provided for you. तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि जो भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ग़िज़ाएं इस दुनिया में पैदा की हैं, भेजी हैं, उसमें से जो अच्छी ग़िज़ाएं हैं, हलाल ग़िज़ाएं हैं, हमें उनको खाना चाहिए. So my dear students, the pre-reading questions, quickly answer the question, how can we maintain good health? By taking bath, by focusing on personal hygiene, wearing clean clothes, cutting our nails, and washing our hands every now and then. So what type of diet should we eat? Healthy, very good. और healthy diet क्या होती है? Fruits and vegetables, very good. तो आप fruits and vegetables खाते हैं? बहुत अच्छी बात है अगर आप फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं. Now we will move forward towards the reading. Quickly open page number 43 in your science 4 books. I hope everybody has opened the books. Now we will start the reading. Put your fingers where I will read. Ways of maintaining good health. Good health is a blessing and a precious gift from Allah Almighty. This is our obligation to take care of our health. यानी कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. We have to keep our bodies healthy because we know that a healthy mind resides in a healthy body.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो इसी तरह से हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, ये भी हेल्दी होगा, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड मौजूद होता है. Knowledge about how to stay healthy is important as staying healthy. Following are some ways to keep ourselves healthy. So, my dear students, let's now quickly look at the ways in which we can keep ourselves healthy. We should take a balanced diet. It is necessary to fulfill our body requirements of nutrients. So, my dear students, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी डाइट जो होती है वो हमारी बॉडी को तमाम न्यूट्रिएंट्स और इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें देती है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो करती है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. वी शुड टेक at least 3 liters of fluids daily, which may include clean water, juices, milk, etc. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी बॉडी के अंदर वाटर के कंटेंट को मेंटेन रखने के लिए, मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए हमें चाहिए कि हम डेली बेसिस पे 3 लीटर्स जो पानी है हम उसको कंज्यूम करें. अब लिक्विड्स जो हैं उसमें कुछ भी आ सकता है, पानी भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, जूसेस भी हो सकते हैं. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिल के हमारे फ्लूइड कंटेंट को मेंटेन रखती हैं. नाउ नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर होम बोन्स, मसल्स एंड joints strong. We should do exercise 30 to 60 minutes daily. So my dear students, daily हमें एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ देती है. तो एक हेल्दी बॉडी के लिए हमें चाहिए कि हम 30 से 60 मिनट्स तक डेली जो है वो एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसमें इंडल्ज हो. नेक्स्ट, we should brush our teeth twice a day to keep our teeth and gums clean. It protects us from many diseases. हमें चाहिए कि दिन में कम से कम 2 बार दांत को ज़रूर साफ करें ताकि हमारे दांत जो है वो सेहतमंद रहें. We should go to bed early to complete enough sleep and be able to get up early in the morning. We should have 8 to 10 hours sleep daily. So my dear students, एक healthy body के लिए आपको चाहिए कि आप जो है वो enough sleep या जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतनी नींद जो है वो ज़रूर लें. और वो ज़रूरी नींद कितनी है? 8 से 10 घंटे. इससे ज़्यादा भी ठीक नहीं है और इससे कम भी ठीक नहीं है. सो टू मेंटेन योर बॉडी हेल्दी यू मस्ट टेक 8 to 10 आवर्स स्लीप, और जल्दी सोने की कोशिश करें, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें टू स्टे हेल्दी. नेक्स्ट, वी शुड टेक अ बाथ डेली टू कीप आवर सेल्स क्लीन एंड हाइजीनिक. सो सफाई निस्फ ईमान है और हमें चाहिए कि हम ज़रूर रोज़ाना जो है वो नहाएं ताकि हमारी जो पर्सनल हाइजीन है, जो हमारी बॉडी है वो साफ़ सुथरी रहे, और साफ़ सुथरे रहने से भी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. हमारी हेल्थ के लिए हमने ये तमाम पॉइंट्स पढ़े हैं, तो इनमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था कि डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स लुक कि बैलेंस डाइट क्या होती है. जब आप बैलेंस डाइट लेंगे तभी आप हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकेंगे. लेट्स हैव अ लुक. बैलेंस्ड डाइट. All foods contain nutrients necessary for our bodies. Different foods have different portions of these nutrients. Some may have any of these nutrients more than others. Other bodies need each nutrient in the correct amount. So my dear students, balanced diet बहुत important है. जो खाना हम रोज़ खाते हैं, दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जो खुराक आप खाते हैं जैसे कि रोटी है, इसमें किसी एक न्यूट्रिएंट जो है उसकी तादाद ज़्यादा होगी. अंडे में, दूध में किसी दूसरे न्यूट्रिएंट की तादाद ज़्यादा होगी. तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों को बैलेंस तरीके से खाएं ताकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नीड्स हैं या जितनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाए. सो फूड कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. सो एक बैलेंस डाइट की क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन ये है कि फूड कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. एक ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए वो मौजूद हों, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं. उन तमाम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के और चीज़ों के हम नाम आगे पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है और वो मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में मौजूद होते हैं. There are 6 major component nutrients of balanced diet. These nutrients are carbohydrates, repeat after me, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals.
ये तमाम वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी ग़िज़ा में होने ज़रूरी हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नहाना बहुत ज़रूरी है. दिन में 2 दफ़ा दांत ब्रश करना बहुत ज़रूरी है. एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है 30 to 60 मिनट्स. इसके अलावा इनफ स्लीप लेना भी ज़रूरी है और रात को जल्दी सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें. इसके अलावा टेक एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड डेली. पानी, दूध और जूसेस का इस्तेमाल करें और 3 लीटर के करीब आपको पानी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए. सो बैलेंस डाइट क्या है? Balanced diet is food containing all types of nutrients in balance is called a balanced diet, जिसमें carbohydrates भी हों, minerals भी हों, proteins भी हों, vitamins भी हों. ऐसी डाइट को हम balanced diet कहते हैं. So my dear students, the components of balanced diet are carbohydrates, minerals, proteins, fats and vitamins. हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा carbohydrates चाहिए होते हैं और proteins और minerals चाहिए होते हैं. vitamins और fats जो हैं ये हमारी बॉडी को कम तादाद में चाहिए होते हैं. So my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, for this worksheet, what you need to do is you have to match the sentence with the correct picture. Very easy. Look at the pictures carefully, read the sentence carefully and then match the correct sentence with the correct picture. I take a shower. So match this picture with the boy taking shower. So this is how you will complete the rest of the worksheet. Now we will move forward towards the next part of the worksheet. Circle the unhealthy foods. Now in this picture you can see a lot of foods. आपको इनमें से जो unhealthy food आपको लगता है उसको आपको circle करना है. For example, what is unhealthy for me is pizzas, chips, ice creams and donuts. These are all unhealthy for me because they have too much oil and sweet in them, which is not very healthy for our body. So consume more and more vegetables and fruits. So my dear students, now is the time for evaluation. How food helps us to maintain good health. Food हमें good health maintain करने में कैसे help करता है? Because if the food will be in the proper form, it will help us in maintaining good health. How does personal hygiene affect our health? Because it will keep ourselves clean, we can maintain good health. So the homework for today is you will do question number 5 from section number B. And question number 3 from section number 3, says C. So this is your homework given on page number 50. For wrap up today, we learned that ways of maintaining good health, which are do exercise daily and take 8 to 10 hours sleep, take bath daily and brush your teeth regularly, drink 3 liters of fluid daily and eat balanced diet. Food containing all components like carbohydrates, fats, lipids, minerals, vitamins and minerals is a balanced diet. So my dear students, I hope now you know all the ways to maintain yourself healthy. So stay tuned for the next lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much.